Morning, students. So we have discussed about the forms of government, the types of government, and even we have studied about how the government is behaving in terms of the natural government or in terms of the perverted government. We have even discussed like we have five forms of government like monarchy, aristocracy, quality democracy, tyranny, oligarchy. So we will be discussing about all these government one by one. So let us start with the first form of government, that is monarchy. So monarchy is the oldest form of government. The state machinery worked according to the command and rule of the monarch. Monarch is thus a form of political regime in which the supreme and final authority is in the hands of a single person wearing a crown, irrespective of whether his office is hereditary or elective. It is the will of one person which ultimately prevails in all the matters of governance. स्टूडेंट बेसिकली मोनार्की एक पुराना फॉर्म है गवर्नमेंट का, इन विच जो सारे रूल्स हैं, कमांड है, वो कौन आगे देगा, वो मोनार्क देगा। रूल कौन करेगा, मोनार्क करेगा। अब जो मोनार्क है बेसिकली, मोनार्क कोई भी हो सकता है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसने ताज पहना हो, वेयरिंग अ क्राउन। वो चाहे हेरिडिटरी आए यानी कि राजा महाराजाओं से आए, यानी कि राजा का बेटा बेटे का बेटा इस तरह से आए, या फिर किसी ने उनका प्रोविंस जीत लिया हो, कोई भी शक्तिशाली राजा हो, इस तरीके का राजा भी मोनार्क बन सकता है। तो बेसिकली मोनार्क इज़ अ किंग हु इज़ वेयरिंग अ क्राउन। तो वो जो पर्सन है जो इस तरीके की किसी भी जंग को जीत के राजा बना हो, या फिर राजा महाराजाओं के ही टाइम से बेटे का बेटा रूल करते आ रहे हों, इस तरह की जो गवर्नेंस है उसे हम मोनार्की गवर्नमेंट कहते हैं। सो इन द आई ऑफ J.W. Garner, in its wider sense, any government in which the supreme and final authority is in the hand of a single person is a monarchy, without regard to the source of his election or the nature and duration of his tenure. जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, बहुत सारे राइटर्स होते हैं, ऐसी ही उनमें से ही एक J.W. गार्नर थे जिन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है उनके सेंस में एक ऐसी सुप्रीम और फाइनल अथॉरिटी है मोनार्की वाली, जिसके अंदर सारी अथॉरिटी एक सिंगल मोनार्क को दे दी गई है। अब वो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चुन के मोनार्क बना हो, किंग बना हो, या फिर वो हेरिडिटरी आया हो। मैटर करता है उसका टेन्योर, मतलब कार्यकाल, जिस कार्यकाल में वो राजा है उसकी गवर्नेंस है। और अगर ऐसी गवर्नेंस है जो कि राजा महाराजाओं के टाइम से बेटे का बेटा राजा बनता आ रहा है, या फिर उसने वो किला या वो प्रोविंस जीत लिया है, तो ऐसी गवर्नेंस को मोनार्की गवर्नेंस कहा जाएगा। So, in this sense, it is immaterial whether his office is conferred by election और इट डिराइव बाय हेरिडिटरी सक्सेशन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको चुन के राजा बनाया गया हो वहाँ का क्राउन, या फिर वो हेरिडिटरी सक्सेशन से आया हो। हेरिडिटरी सक्सेशन मैंने आपको बताया कि जो पुराने काल से राजा का बेटा बेटे का बेटा इस तरीके के सक्सेशन से आया हो। Whether he bears the title of emperor, king, czar, president or dictator. Emperor सबको पता है कि कौन होता है, ठीक है। एम्पर कौन हुआ, कोई भी रूलर, किंग राजा। ज़ार होते हैं रशिया के जो एम्प्रर्स होते हैं, रशिया के जो राजाज होते हैं उनको ज़ार कहा जाता था। जैसे कि अगर हम बात करें 1971 एंड 1917 की, तो वहाँ पे उनके एक एम्प्रर थे ज़ार निकोलस, जो कि लाइक ही वाज द डिक्टेटर लाइक हिटलर। तो इस तरीके के जो राजा होते होते थे अथॉरिटेटिव, उन्हें ज़ार कहा जाता था। So it is the fact that the will of one man ultimately prevails in all the matter of government, which give it the character of monarchy. Means कोई भी person
جس نے وہاں کا راجیہ کا جیت لیا ہو، وہاں کا راجہ بن گیا ہو کسی بھی طریقے سے، چاہے اسے لوگوں نے بنایا ہو، چاہے وہ وہاں پہ جیت کر آیا ہو، چاہے وہ ہیریڈیٹری سکسیشن سے آیا ہو، اگر وہ کنگ ہے، اس نے کراؤن پہنا ہوا ہے وہاں کے راجا کا اور اس کی گورننس ہے، تو ایسی جو گورننس ہوگی وہ monarchy گورنمنٹ کہلائی جائے گی. With the development of republican and democratic form of government, monarchical form of government declined. In some cases, as in the United Kingdom, monarchs are merely retained as the ceremonial or nominal head of the government, devoid of key of political powers. سو واٹ ہیپن اسٹوڈنٹ، جیسے جیسے ریپبلکس آگے آگے بڑھتی چلی گئی، ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ آگے چلی گئی، جو یہ مونارکل فارم آف گورنمنٹ تھی یہ ڈکلائن ہو گئی، یعنی کہ یہ ہٹتی چلی گئی. جیسے کہ اگر ایگزامپل ہے یونائٹیڈ کنگڈم کا، آج بھی وہاں پہ مونارکی گورنمنٹ ہے، لیکن وہ کیول ایک نام کی ہے، سیریمنی کی ہے، یعنی کہ وہاں کے جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ صرف نامینیٹڈ ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کنگ ہے، یہ کوئین ہے. وہاں پہ جو مین چلتا ہے وہ پولیٹیکل پاورز کی چلتی ہیں. وہاں پہ کنگ کوئین کا راج ہے، پر ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل پاورز بھی ہیں. سو ایز observed by C.C. Roddick, constitutional monarchs are loved and respected by their people as a symbols of unity of the nation or empire, but are devoid of political powers. پولیٹیکل تھنکر تھے، آبزرور تھے سی سی روڈے، انہوں نے بولا کہ اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے تو جو وہاں کے monarchs ہیں، راجا جو کہ رول کرتے آ رہے ہیں، ان کو لوگ بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت پہلے سے رول کرتے آ رہے ہیں. وہ ایک سمبل ہے یونٹی کا، آپس میں جڑ کے رہنے کا، ٹھیک ہے، اور وہ بہت پراتن کال سے چلتا آ رہا ہے. لیکن ان کا رول نہیں رہا، جو مین رول ہے وہ پولیٹیکل پاورس ہی ہیں، ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل پاورس نہیں گئی ہیں، کیول اور کیول کیونکہ لوگ انہیں پیار کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، تو اس لیے ان کا کنسیڈریشن بھی ہو رہا ہے. This was the monarchy form of government. Now we will study about the aristocracy form of government.